some halogen. The carrier here is phosphorus pentachloride. Byproduct कौन पाइब POCl3, that is your benzene chloride. Phenol when react with phosphorus pentachloride, it gives us chlorobenzene or benzene chloride plus some acid. These are the preparation of haloarine from benzene diazonium chloride, silver benzoate and phenol. Next we discuss about physical property of haloarine. First, these are oily liquids. These are polar or non-polar. तुम जानिछ पोलार केते बेले हबो, नॉन पोलार केते बेले हबो. जदि similar atoms are connected with each other, they gain some electronegativity which has dipole moment 0. So they are non-polar. But in haloarine they have some different electronegativity, so they are polar but less polar. जेहेतु एमाने aromatic, these have some sweet smelling. These have some sweet smelling. Hela due to less polarity, they are insoluble in water but soluble in organic solvent. Organic solvent तुम्हें जानिछ, for example your ethanol, benzene, etc. Next we discuss about the melting point and boiling point. Melting point हो किंबा boiling point हो, first देखियो boiling point. Ortho, para and meta isomers close to similar boiling point, so it is difficult to separate. But melting point of para compound is greater than the ortho and meta compounds. Again, first कौन जान लो, oily liquids संकर smell sweet, polar हेले मध्य due to less polar they are insoluble in water but soluble in organic solvent. Boiling point कौन, ortho para meta समस्त प्राय close boiling point, so difficult तांको हबो separate करिया पई. Melting point para compound मानकर ortho and meta compound अपेक्षा melting point अधिक रहइबो. Then जानिबो तांकर reactivity. जदि से सिमिलर अल्किल ग्रुप अच्छी किंबा से सिमिलर आरिन ग्रुप सहित रिएक्ट करुँचे, देन तांकर ऑर्डर केमती रहिबो, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. कौन पाई तुमको कहला प्रथम रू, जदि फॉर एग्जांपल आरिन मोर नौ बेंजीन है, ये नियाई क्लोरीन
ब्रोमीन आयरन ग्रुप सेम केवल हालोजेन ग्रुप रे डिफरेंस आछि तो जेते बेले ए ऑर्डर रे रहइबो प्रीवियस रे जेते एलिफेटिक नउथलो कोन जस्ट रिवर्स बट ड्यू टू द मोर स्टेबल कंपाउंड ऑफ द बेंजाइलिक ग्रुप सो दे फॉलो दिस order of reactivity. Then we discuss about the nature of CX bond in haloarine. The nature of CX bond. CH3Cl कंपैरिजन करके पढ़ देख एठी जेते बेले तुम Cl बॉन्ड नौच कार्बन पोजेस sp3 here the carbon possess alpha sigma bond केते 1 2 3 एठी केतेटा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 हैला एठी 4 सिग्मा बॉन्ड एठी 3 सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड one has S other 3 are P character here they have sp2 जेहेतु एठी sp2 character अछि तो तुमको केते बेले कहैतिला पोलैरिटी केते बेले बढ़िबो जति कि तमर s परसेंटेज बढ़िबो s परसेंटेज कोठी अधिक बढ़िबो एठी ना एठी तो जते बेले ए दिटा कंपैरिजन करिवो दिस आर लेस पोलर देन दिस ओके दैट इज अबाउट द CX तुम केवल CX बॉन्ड रे एतिकी मन रखिबो CX बॉन्ड रे एटी हाइब्रिडाइजेशन तमरा sp2 बट हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3 then we discuss about the chemical properties of the haloarine chemical properties हैला केमिकल प्रॉपर्टीज को जीवा पूर्वर तुमको कहला से को टाइप रो रिएक्शन को अंडरगो करिवो आइदर एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ता एठी हबनी ड्यू टू the absence of multiple bond so it undergoes substitution reaction again substitution reaction is of two types nucleophilic substitution and electrophilic substitution nucleophilic substitution एठी drastic condition रे हबो काहे कि ना जते बेले तमे sp2 कैरेक्टर करूछ एटी वैलेंसी अछि ये कौन करिवो डबल बॉन्ड क्रिएट करिवो डबल बॉन्ड क्रिएट कला परे C and X bond is more stronger due to more stronger the halogen group cannot be removed by the attack of the other reagent so the haloarine undergoes nucleophilic substitution reaction in drastic condition so we read about some various example which undergo in nucleophilic substitution ता पूर्वर तुमको फास्ट जाना पड़ो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रो मेकानिज्म नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रो मेकानिज्म कोन